हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेस्ट फ्रेंड कन्वर्सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। So what is method overloading? In Java, it is possible to define two or more methods within the same class that share same name as long as the parameter declaration are different. Java में दो या दो से ज़्यादा मेथड का यूज़ किया जा सकता है। दोनों मेथड के नेम सेम हो सकते हैं जब तक उसके पैरामीटर डिक्लेरेशन डिफरेंट हैं। Method overloading is one of the way that Java supports polymorphism. Method overloading Java support करता है. It is a part of the polymorphism. The polymorphism is a combination of two words, that is poly and morphism. Poly means many, morphism means form. When an overloaded method is invoked, Java uses type and or number of argument. जब method overloading का यूज किया जाता है तो Java टाइप पे या नंबर ऑफ आर्गुमेंट को यूज करके मेथड ओवरलोडिंग का यूज करता है. The overloaded methods must be different in types and number of their parameters. Methods which are overloaded in the class must have different types and number of parameters should be different. Constructor overloading. So what is constructor overloading? You can also overload the constructor method, and in fact in most of the real world classes that you create, overload constructor will be the normal, not the exception. It's a normal to use the constructor overloading in Java. It's not an exception in Java. And in most real world scenario, we talk about the real world classes that we create, we use constructor overloading as a normal way. So what is method overriding? In the class hierarchy, when a method is in a subclass that has the same name and types as a method in its superclass, then the method in subclass is said to be override the method in the superclass. When we have the class hierarchy that can have more than one classes, so the method which we declared in the superclass and the method that we declared in subclass, both the methods have same name and types, then the method in subclass is override the method in the superclass. तो जब हमारे पास दो क्लास बनी है और दोनों में मेथड है, सो जो सुपर क्लास का मेथड है और जो सब क्लास का मेथड है, दोनों का टाइप सिग्नेचर सेम है और नाम भी सेम है, तो जो सब क्लास का मेथड होगा वो सुपर क्लास की मेथड को ओवरराइड कर देगा, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग. So let's take the example of constructor overloading and method overloading. Here we have take the constructor. This is a normal constructor, and this is a default method. Can we see it like this? Constructor with one parameter, so it is possible in Java. And we talk about the this is method with one parameter. So let's print this. We will make the object of class demo, and let's call the method this and d dot math. Here we have to pass the argument, let's say 2, and when we print, so this constructor with no argument, this is a default method, constructor with one argument. So is the output. We can see the constructor with no argument, and this is the default method, the d dot math, the math
method has the statement that is this is a default method. और math जिसमें हमने पैरामीटर पास किया है जो कि int I के लिए गया था, एंड दिस इज अ मेथड विद वन पैरामीटर, पर हमारा कंस्ट्रक्टर विद वन पैरामीटर ये प्रिंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें अपने कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट में भी पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे अगर प्रिंट कराएंगे, सो दिस इज द आउटपुट, द कंस्ट्रक्टर विथ वन पैरामीटर। ये भी प्रिंट हुआ क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही वो इनिशियलाइज हो जाता है एंड प्रिंट हो सकता है। सो यहाँ पे हमने जब इसे इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे हमने एज एन आर्गुमेंट टू वैल्यू पास की जो कि डेमो इज हैविंग इंट आई एज अ पैरामीटर। सो वो वहाँ पे पास हुआ और ये प्रिंट हुआ। वी कैन हैव कंस्ट्रक्टर लाइक इंट आई कॉमा इंट के, this is a constructor with two parameter, and similarly with method we can have this is a method with two parameter. So let's print this two 1 comma 2 and so here हम देख सकते हैं अपना आउटपुट, कंस्ट्रक्टर with no argument, the constructor with one parameter that is 2 which we passed in the int I having one parameter, the constructor with two parameter which we pass in int I int k as value 1 and 2, and this is a default method d.math is called here. So this is our default method, and this is method with one parameter. So this is the method d.math where we have passed the parameter 2. So this is all about the constructor overloading, method overloading.